Hi guys, welcome back to our channel. Today I am here with 9th chapter that is the diseases of the circulatory system जिसकी सीरीज स्टार्ट होती है I00 to I99. In this chapter we will see hypertension, atherosclerotic coronary artery diseases and angina, intraoperative and post-procedural cerebrovascular accident, sequela of cerebrovascular diseases, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस जिसे हम कहते हैं AMI. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, already I have uploaded one video that is circulatory system. You can find in description box. Okay, what is circulatory system? Circulatory system is the system of organs that includes the heart, blood vessels and blood which circulate throughout the entire body of human. Okay, that is called circulatory system. Then we will see diseases of the circulatory system. Already I have listed few diseases related to circulatory system. First, hypertension, short form HTN or HT. It is most important. Short form is most important in medical coding, guys. Hypertension is also called as high blood pressure. Okay, high blood pressure, hypertension is a long-term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. High blood pressure usually doesn't cause symptoms. Long-term high blood pressure, however, is a major risk factor for stroke, coronary artery diseases, heart failure, atrial fibrillation, peripheral artery diseases, etc. etc. Okay, so how we can code for hypertension and what is guideline for hypertension for this chapter. ऑलरेडी मैंने विथ का यूज़ कैसे होता है अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में ये मैंने डिस्कस किया है. उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, फर्स्ट हाइपरटेंशन. हम लोगों को हाइपरटेंशन इस टॉपिक में रिलेशन देखना है. रिलेशंस बिटवीन हाइपरटेंशंस एंड हार्ट इन्वॉल्वमेंट एंड रिलेशंस बिटवीन हाइपरटेंशंस एंड kidney involvement. Okay, as the two conditions are linked by the term with in the alphabetic index. These conditions should be coded as related even in the absence of provider documentation explicitly linking them, unless the documentation clearly states the conditions are unrelated. For hypertensions and conditions not specifically linked by relational terms such as with, associated with, due to, in the classification, provider documentation must link the conditions in order to code them as related. Okay, ये रिलेशंस बताने के लिए हाइपरटेंशंस विद हार्ट फेलियर या हाइपरटेंशंस विद किडनी, ये हम लोगों को विथ और विदाउट ये दोनों का यूज़ ज़्यादा होने वाला है. सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं हाइपरटेंशन विथ हार्ट फेलियर. आप लोग ये ट्री डायग्राम में देख ही रहे होगे. हाइपरटेंशन और उसके लेफ्ट हैंड साइड में है विथ हार्ट फेलियर. सो ऐसा कंडीशंस रहा हाइपरटेंशन विथ हार्ट फेलियर. सो वी कैन कोड I11.0 सीरीज. ओके, सो hypertension with heart condition classified to I50, okay, are assigned to code from category I11. okay, I11 कोड करने के लिए उसके साथ I50 भी जाएगा. ओके, hypertensive heart disease use conditional code from category I50 that is heart failure to identify the type of heart failure in those patients with heart failure. The same heart conditions with hypertensions are coded separately if the provider has documented they are unrelated to the hypertension sequence according to the circumstances of the admissions or encounter. Okay, then next hypertensive chronic kidney diseases. Okay, hypertensive chronic kidney diseases जो मिडल वाला ट्री डायग्राम है. ओके, मिडल में जो
हाइपरटेंसिव सीकेडी दिया है वो, उसमें स्टेजेस आएंगे, स्टेज 1 स्टेज 2 वी विल से। असाइन कोड्स फ्रॉम कैटेगरी I12, ओके, हाइपरटेंशंस विथ सीकेडी, इसका सीरीज आएगा I12, ओके। असाइन कोड फ्रॉम कैटेगरी I12 that is hypertensive chronic kidney diseases when both hypertensions and conditions classified to category N80 that is chronic kidney disease are present, ओके। जैसे हम लोगों ने इसके पहले I11 के साथ हार्ट फेलियर का कोड लगाते थे I50 सीरीज़ वाला, वैसे हम लोगों को हाइपरटेंसिव विथ किडनी सीकेडी के साथ N18.9 या N18 सीरीज़ लगाते हैं, ओके। किसके साथ? I12.9। ट्री डायग्राम में इजी अंडरस्टैंडिंग होगी, सो ट्री डायग्राम में आप देख सकते हो। देन assign code from category I12 which is hypertensive chronic kidney disease when both hypertensions and condition classifiable to category N18 which is chronic kidney disease CKD are present. CKD should not be coded as hypertensive if provider indicates the CKD is not related to the hypertension, okay. CKD should not be coded as hypertensive if the provider indicates the CKD is not related to hypertension. The appropriate code from category N18 should be used as a secondary code with the code from category I12 to identify the stage of chronic kidney disease, okay. हमेशा I12 ये प्राइमरी कोड जाएगा, जैसे प्रीवियस हम लोगों ने देखा था I11.0, I11 पॉइंट प्राइमरी जाएगा, I50 सेकेंडरी जाएगा। इसमें हाइपरटेंसिव विथ सीकेडी में I12 सीरीज फर्स्ट जाएगा, प्राइमरी जाएगा, देन सेकेंडरी N18 सीरीज जाएगा, ओके। सिंपल गाइडलाइन है। देन if a patient has a hypertensive chronic kidney disease and acute renal failure, the acute renal failure should also be coded, okay, sequence according to the circumstances of the admissions or encounter, okay. सो सपोज ये हाइपरटेंसिव क्रोनिक किडनी के साथ एक्यूट रीनल फेलियर या अदर कुछ एक्यूट कंडीशंस हुई है, तो हम लोग उस सीक्वेंस के हिसाब से वो जो इनकाउंटर रहेगा उसके हिसाब से सीक्वेंस करेंगे, राइट। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट, हाइपरटेंसिव हार्ट एंड क्रोनिक किडनी डिसीजेस। हाइपरटेंसिव हार्ट, ओके, क्रोनिक किडनी डिसीज, अभी दोनों को कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोगों ने हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर देखा है, हाइपरटेंसिव सीकेडी देखा है, तो उसका कॉम्बिनेशन अभी देखते हैं, ओके। हाइपरटेंसिव हार्ट एंड क्रोनिक किडनी डिसीज। असाइन कोड फ्रॉम कॉम्बिनेशन कैटेगरी I13, ओके। आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट हम लोगों ने देखा था हाइपरटेंसिव विथ हार्ट फेलियर जिसका सीरीज था I11, ओके। देन सेकंड देखा था हाइपरटेंसिव विथ सीकेडी जिसका सीरीज था I12। अभी हम लोग देख रहे हैं हाइपरटेंसिव हार्ट एंड क्रोनिक किडनी डिसीजेस जिसका सीरीज है I13, ओके। I11, I12 एंड I13। सिंपल है, आप लोग ये ट्री डायग्राम फॉलो करोगे तो इजीली याद रहेगा। असाइन कोड फ्रॉम कॉम्बिनेशन कैटेगरी I13 विच इज़ हाइपरटेंसिव हार्ट एंड CKD when there is hypertension with both heart and kidney involvement. If heart failure is present, assign an additional code from category I50 to identify the type of heart failure, okay. I13 के साथ हम लोग सपोज हार्ट फेलियर होगा तो उसका टाइप समझने के लिए, ओके, तो हम लोग I50 कोड देंगे, ओके। I13 जैसे आप लोग ट्री डायग्राम में देख रहे हैं, I13.0, I50.9 एंड देन N18.9, यानी दोनों को कॉम्बिनेशन हम लोगों को I13 सीरीज में देखना है। द एप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम कैटेगरी N18 chronic kidney disease should be used as a secondary code with the code from category
I13 to identify the stage of chronic kidney disease. Okay, stage 1, stage 2, stage 3 up to ESRD. ओके, तो ये स्टेज रहती है, उसके लिए हम लोग स्टेज ऑलरेडी मेंशन रहेगी मेडिकल रिकॉर्ड में, वही स्टेज हम लोगों को शो करने के लिए N18 का यूज़ करना है. ओके, देन द कोड is category I13, which is a hypertensive heart and CKD are combinations codes that include hypertension, heart disease and CKD. The include note at I13 specifies that the conditions included at I11 and I12 are included together in I13. If patient has hypertension, heart disease and chronic kidney disease, then code from I13. ओके, तीनों भी डिसीज हुए हो गए, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज एंड CKD, उस समय पे हम I13 शुड बी यूज्ड. ओके, नॉट इंडिविजुअल कोड्स फॉर हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज एंड CKD. ओके, मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो ये गलती करते हैं, न्यू जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं. अभी तीनों कंडीशंस है तो हाइपरटेंशन का अलग करेंगे, हार्ट डिसीज़ का अलग करेंगे, क्रोनिक किडनी का CKD का अलग करेंगे. ऐसा नहीं करना है, ये गाइडलाइन है. सो हम लोगों को ये गाइडलाइन फॉलो करना है. ओके, फॉर पेशेंट्स विद बोथ एक्यूट रीनल फेल्यूर एंड क्रोनिक किडनी डिसीज, द एक्यूट रीनल फेल्यूर शुड also be coded sequence according to the circumstance of the admissions or encounter. Already we have discussed. Okay, suppose एक्स्ट्रा कोई डिसीज़ और रीनल फेल्यूर जैसे कुछ एक्यूट कंडीशंस रही तो हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से देखें. लेकिन हम लोगों को याद रखना है इस चैप्टर में आई जो सीरीज़ है I11, I12, I13 ये प्राइमरी कोड जाएगा. ओके, देन hypertensive cerebrovascular disease. For a hypertensive cerebrovascular disease, first assign appropriate code from category I60 to I69 followed by the appropriate hypertension code. Okay, suppose cerebrovascular diseases related जो भी इसके लिए ये एक सेपरेट सीरीज़ दी है I60.I69. ओके, सो हम लोगों को जो ICDdata.com जो साइट्स रहती है उसके वहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कोड करते समय. ओके, ये याद रखना है. हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इसके लिए ये क्या सीक्वेंस रहेगा? इसके लिए सब कैटेगरी H35.0, सब कैटेगरी H35.0 background retinopathy and retinal vascular changes should be used along with code from category I10 to I15 in the hypertensive diseases section. To include the systemic hypertension, the sequencing is based on the reason for encounter. ओके, जो भी सीक्वेंस रहेगा वो रीज़न फॉर इनकाउंटर रहेगा. ओके, अभी सपोज आई सीरीज़ नहीं भी आ रही होगी तो हम लोगों को जो रीज़न फॉर इनकाउंटर है, ओके, पेशेंट किस चीज़ के लिए आया है और फिजिशियन उस पर क्या क्या कर रहा है उस पर डिपेंड रहेगा कि प्राइमरी कोड कौन सा जाएगा. इसीलिए यहाँ पे बोला है द सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन द रीज़न फॉर द इनकाउंटर. ओके, देन नेक्स्ट हाइपरटेंशन सेकेंडरी. Secondary hypertension is due to underlying condition. Two codes are required. One to identify the underlying etiology and one from category I15 to identify the hypertension. Right? Sequencing of code is determined by the reason for admissions or encounter. Okay? जो फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि आई सीरीज फर्स्ट जाएगा और जो एडिशनली इटियोलॉजी रहेगी वो सेकेंडरी जाएगी. देन हाइपरटेंशन ट्रांजिएंट, असाइन कोड R03.0 elevated blood pressure reading without diagnosis of hypertension unless patient has an established diagnosis of hypertension. Assign code O13.
which is gestational or gestational hypertension without significant proteinuria pre-eclampsia for transient hypertension of pregnancy. Okay, then next, hypertension controlled. This diagnostic statement usually refers to an existing state of hypertension under control by therapy. Assign the appropriate code from category I10 to I15, which is hypertensive diseases. Next, hypertensive crisis. Assign code from category I16, which is hypertensive crisis. For documented hypertensive urgency, hypertensive emergency, or unspecified hypertensive crisis, code also any identified hypertensive diseases. जो I10 to I15 सीरीज़ वाला है उसमें से कोई कोड मेंशन किया है तो हम लोग वो भी करेंगे. द सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन द रीजन फॉर इनकाउंटर. ओके, उसका सीक्वेंस भी रीजन फॉर इनकाउंटर के बेस पे रहेगा, बिकॉज यहाँ पे I16 भी आएगा और दूसरा I सीरीज़ भी आएगा. तो हम लोग उस समय पे क्या करेंगे, जो भी रीज़न फॉर इनकाउंटर है उसको प्राइमरी कोड देंगे, राइट. ओके, और जो मोर स्पेसिफिक है. ओके, सिंपल है. देन नेक्स्ट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन. Pulmonary hypertension is classified to category I27, which is other pulmonary heart diseases. For secondary pulmonary hypertension, code also any associated conditions or adverse effect of drugs or toxins. The sequencing is based on the reason for encounter, except for adverse effect of drugs. Okay. देन ये हो गया हम लोगों का हाइपरटेंशन. ओके, सिंपल पॉइंट है. फर्स्ट हम लोगों ने देखा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट हम लोगों ने देखा था हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर, राइट. जैसे ट्री डायग्राम में देखे हैं, हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर I11 सीरीज अलॉन्ग विद I50 कोड जाएगा. देन हाइपरटेंसिव क्रोनिक किडनी डिसीजेस, उसका सीरीज स्टार्ट होता है I12 के साथ. I12 अलॉन्ग विद N18 सीरीज जाएगा. ओके, उसमें स्टेजेस रहेगी, वो स्टेज मेंशन करता है यानी इंडिकेट करता है N18 सीरीज. देन ये दोनों को कॉम्बिनेशन I11 और I12 का कॉम्बिनेशन है हाइपरटेंसिव हार्ट एंड क्रोनिक किडनी डिसीजेस, जिसका सीरीज़ है I13. उसके साथ हम लोग I50 भी सीरीज़ दे सकते हैं, I18 भी सीरीज़ दे सकते हैं. वो डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए कि हार्ट फेलियर हो गए या स्टेज है, तो हम लोग ये कोड दे सकते हैं. और उसके साथ साथ कोई अदर कंडीशंस होगी रीनल, जैसे हम लोगों ने देखा है एक्यूट रीनल फेलियर, तो वो भी कोड हम दे देंगे. और इसमें हम लोगों को देखना है कि आई जो सीरीज़ है वो प्राइमरी कोड जाएगा. ओके, देन हम लोगों ने देखा है हाइपरटेंसिव सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज, जिसकी सीरीज स्टार्ट होती है I60. ओके, देन हम लोगों ने देखा है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, जिसकी सीरीज स्टार्ट होती है I35. ओके, देन हम लोगों ने देखा है हाइपरटेंशन सेकेंडरी, जिसका हम लोग देख सकते हैं I15 सीरीज दे सकते हैं. देन हम लोगों ने देखा है हाइपरटेंशन ट्रांजिएंट, जिसमें हम लोगों ने देखा है O सीरीज प्लस R03 सीरीज. देन हम लोगों ने देखा है हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड. ओके, देन हम लोगों ने देखा है हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड. ओके, देन हम लोगों ने देखा है हाइपरटेंसिव क्राइसिस. ओके, देन हम लोगों ने देखा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसका सीरीज स्टार्ट होता है I27. ओके, ये हो गया हाइपरटेंशन, जो हम लोग ट्री डायग्राम से इजी समझ सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड angina. Okay, then ICD-10-CM has combination codes for atherosclerotic heart disease with angina pectoris. Okay, ये दोनों डिसीज़ के लिए हम लोगों के पास कॉम्बिनेशन कोड है. सो हम लोग कॉम्बिनेशन कोड देंगे जब ये दो कंडीशंस सिंगल डॉक्यूमेंट्स में होगी. तो
The subcategories for these codes are I-25.11, which is atherosclerotic heart disease of native coronary artery with angina pectoris. Okay, कौन सा कोड है? I-25.11. And I-25.7, which is atherosclerosis of coronary artery bypass graft and coronary artery of transplanted heart with angina pectoris. ओके, सो हम लोगों को प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से बाईपास सर्जरी या कोरोनरी आर्टरी ट्रांसप्लांट हुए हैं. ओके, सो ये सब चीज़ों पे हम कोड डिपेंड रहेगा. ओके, देन when using one of these combination code, it is not necessary to use an additional code for angina pectoris. जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि हाइपरटेंशन विथ हार्ट फेलियर होता है, तब हम लोग एडिशनली कोड देते हैं I-50 सीरीज़ वाला. बट यहाँ पे हम लोगों को अंजाइना पेक्टोरिस का सेपरेटली या एडिशनली कोड नहीं करना है. ओके, कॉम्बिनेशन कोड है वही देना है. अब causal relationship can be assumed in a patient with both atherosclerosis and angina pectoris unless the documentation indicates the angina is due to something other than the atherosclerosis. If a patient with coronary artery disease is admitted due to the acute myocardial infarctions, the acute myocardial infarction should be sequenced before coronary artery diseases. ओके, ये MI का कोड हम फर्स्ट देंगे. ओके, बिफोर कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये यहाँ पे गाइडलाइन है. देन नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट प्रोसीजरल सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट. Medical record documentation should clearly specify the cause or effect relationship between the medical intervention and cerebrovascular accident in order to assign code for intraoperative or post-procedure cerebral accident. Proper code assigned depends on whether it was an infarction or hemorrhage and whether it occurred intraoperatively or postoperatively. If it was a cerebral hemorrhage, code assigned depends on the type of procedure performed. Okay, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म हुई है उसके हिसाब से हम लोगों को कोड असाइन करना है. ये थे इंट्राऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर. देन सिक्वेला ऑफ सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज. ओके, सिक्वेला मीन्स लेट इफेक्ट. ओके, सपोज कोई भी सर्जरी हुई है और उसका इफेक्ट बाद में यानी आफ्टर 1 मंथ या 1 ईयर दिखा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिक्वेला. ओके, फर्स्ट पॉइंट कैटेगरी I-69 सिक्वेला ऑफ सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज. ओके, I-69 ये सीरीज़ है. Category I-69 is used to indicate conditions classifiable to category I-60 to I-67 as the causes of sequela, themselves classified elsewhere. These late effects include neurologic deficits that persist after initial onset of conditions classifiable to category I-60 to I-67. The neurologic deficits caused by cerebrovascular disease may be present from the onset or may arise at any time after the onset of the condition classifiable to categories I-60 to I-67. Codes from category I-69 sequela of cerebrovascular disease that specify hemiplegia, hemiparesis and monoplegia identify whether the dominant or non-dominant side is affected. Should the affected side be documented but not specified as dominant or non-dominant, and the classification system doesn't indicate the default, code selection is as follows. For ambidextrous patient, the default should be dominant. If the left side is affected, the default is non-dominant.
If the right side is affected, default is dominant. ओके गाइज, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डोमिनेंट क्या होता है, नॉन डोमिनेंट क्या होता है और एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है, यह हम लोगों ने देखा था. फिर भी हम लोग एक बार सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं. राइट साइड, राइट हैंडेड जो पेशेंट रहेगा उसको हम डिफ़ॉल्ट डोमिनेंट देते हैं. लेफ्ट हैंडेड जो रहेगा डिफ़ॉल्ट हम नॉन डोमिनेंट देते हैं. और जो कोई भी काम करने के लिए दोनों हाथों का यूज़ सिमिलर करता है उसे हम एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कोड्स फ्रॉम कैटेगरी I-69 with codes from I-60 to I-67. Codes from category I-69 may be assigned on the healthcare record with codes from I-60 to I-67 if the patient has current cerebrovascular disease and deficits from an old cerebrovascular disease. Then next, codes from category I-69 and personal history of transient ischemic attack TIA and cerebroinfarction Z86.73. Codes from category I-69 should not be assigned if the patient doesn't have neurologic deficit. Then most important point, acute myocardial infarction AMI. ओके, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज CPC एग्ज़ाम के लिए भी, और जो मेडिकल कोडिंग कोड करते समय भी हम लोगों को AMI और STEMI और NSTEMI इम्पोर्टेंट यानी यूज़फुल रहता है. सो टाइप 1 ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ओके, इसे शॉर्ट में बोलते हैं STEMI. ओके, एंड नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को हम NSTEMI. सो the ICD-10-CM codes for type 1 AMI identify the site such as anterolateral wall or true posterior wall. Subcategory I-21.0 to I-21.2 and code I-21.3 are used for the STEMI. I-21.3 used for STEMI and I-21.4 used for NSTEMI. ओके, ये दोनों याद रखने हैं. इज यूज फॉर टाइप नॉन EST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस एंड नॉन ट्रांसम्यूरल EMIs. इफ टाइप 1 NSTEMI evolves to STEMI, assign the STEMI कोड. ओके, अभी NSTEMI और STEMI में हम लोग assign the code STEMI. Okay, if the type 1 STEMI converts to NSTEMI due to thrombolytic therapy, it is still coded as a STEMI. Okay, suppose STEMI से NSTEMI कन्वर्ट हो गया, ओके, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी से, तो फिर भी हम लोग NSTEMI कोड करेंगे. ये गाइडलाइन है acute myocardial infarction के. Then for encounter occurring while the myocardial infarction is equal to or less than 4 weeks old, including transfer to another acute setting or post-acute setting, and the myocardial infarction meets the definitions for other diagnoses, codes from category I-21 may continue to report it. Okay, for encounters after the 4 weeks time frame and the patient is still receiving care related to myocardial infarction, the appropriate aftercare code should be assigned rather than the code from category I-21. Okay, for old or healed myocardial infarctions not required further care, code I-25.2 which is old myocardial infarctions may be assigned. ओके, यहाँ पे 3 कोड दिए हैं गाइज, I-21, ओके, और I-25.2 फॉर ओल्ड myocardial infarctions. ओके,
Then acute myocardial infarction unspecified. For unspecified, we can code I21.9, which is acute myocardial infarction unspecified. Okay, 9 indicate unspecified, right? Is the default for unspecified acute myocardial infarction or unspecified type if only type STMI or transmural MI without the site is documented. Assign code I21.3, which is STMI of unspecified site. ओके, सेपरेटली कोड दिया है I21.3, सो हम लोग वो यूज़ करेंगे. Then next, AMI documented as non-transmural or subendocardial but site provided. If an MI is documented as non-transmural or subendocardial but the site is provided, it is still coded as a subendocardial MI. ओके, ये गाइडलाइन है, ये याद रखना है अपने को. देन नेक्स्ट, सबसिक्वेंट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. अ कोड फ्रॉम कैटेगरी I22 which is subsequent STMI and NSTMI is to be used when patient who has suffered a type 1 or unspecified AMI has a new AMI within the 4-week time frame of the initial AMI. A code from category I22 must be used in conjunction with code from category I21. The sequencing of the I22 and I21 codes depend on the circumstances of the encounter. Then do not assign code I22 for subsequent myocardial infarctions other than type 1 or unspecified. For subsequent type 2 AMI, assign only code I21.A1. For subsequent type 4 or type 5 AMI, assign only code I21.A9. ओके, सेपरेट कंडीशन के लिए सेपरेट कोड अवेलेबल है. सो हम लोगों को ये कोड्स याद रखने पड़ेंगे. ओके, इफ सब्सिक्वेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस ऑफ वन occurs within 4 weeks of myocardial infarctions of a different type, assign the appropriate codes from category I21 to identify each type. Don't assign a code from I22. Codes from category I22 should only be assigned if both the initial and subsequent myocardial infarctions are type 1 or unspecified. Okay. Then next point, other type of myocardial infarction. The ICD-10-CM provides codes from different type of myocardial infarctions. Type 1 myocardial infarctions are assigned to code I21.0 to I21.4. Type 2 myocardial infarctions is assigned to code I21.A1. Myocardial infarctions type 2 with the underlying cause coded first. Okay, do not assign code I24.8 other form of acute ischemic heart disease for the demand ischemia. If a type 2 AMI is described as a NSTEMI or STEMI, only assign code I21.A1. Okay, codes I21.01 to I21.4 should only be assigned for type 1 AMIs. Acute myocardial infarctions type 3, 4A, 4B, 4C and 5 are assigned to code I21.A9, which is other myocardial infarction type. The code also and code first notes should be followed related to complications and for coding of post-procedure myocardial infarctions during और फॉलोइंग कार्डियक सर्जरी. ओके, कोड एल्सो कोड फर्स्ट ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है. ओके गाइज, ये वाले थे गाइडलाइंस
कुछ गाइडलाइंस मैंने जस्ट रीड की है, ओके। लेकिन उस गाइडलाइन को हम लोगों को सिर्फ याद रखना है, ओके। जब भी हम लोग किसी क्या बोलते किसी प्रोसेस में वर्क करते हैं, ओके, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, उस समय हम लोगों को एसओपी मिलती है, उस एसओपी के हिसाब से हम लोग कोड करते हैं। क्लाइंट के डिमांड से ही हम लोग कोडिंग करते हैं। ये भी जो चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन है उसको हम जस्ट यूज करके हम वो एसओपी फॉलो करते हैं, ओके। सो ये जो मैंने रीड किया है आप लोग थोड़ा पॉज करके वीडियो को पॉज कर करके थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सिंपल है, कुछ ने डायरेक्ट कोड्स दिए हैं पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए, दैट्स वाई मैंने वो रीड किया है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट